Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to continue chapter 5, The Coming of the Mughals. Today we are going to study about Humayun. Humayun 1530 to 56. Beloved of Babur, Humayun was expected to carry on the legacy of his father. He was the eldest of Babur's son and 23 when he succeeded to the throne. However, he did not have his father's energy and personality, and fate had a different role for him. Humayun inherited a kingdom which was not yet fully in his control. He faced resistance from Afghans and the Rajput and had to try and subdue both to secure his throne. So, हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा जिसने 23 साल की उम्र में तख्त संभाला। उसके पास अपने बाप जैसी एनर्जी और शख्सियत नहीं थी और किस्मत ने उसके लिए कुछ अलग ही सोचा था। हुमायूं ने जब किंगडम पे कब्जा किया तो वो फुली उसके काबू में नहीं था। उसको हर तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे कि अफगान्स और राजपूत ने उसको बहुत मुश्किल वक्त दिया। Humayun had also been asked by Babur to be kind to his brother, and consequently he divided the empire among his three brothers Kamran, Askari Mirza and Hindal. बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ रहमदिली से पेश आने का कहा था। इसीलिए हुमायूं ने अपने एम्पायर को तीनों भाइयों में तकसीम किया। तो उसके तीन भाई कामरान, अस्करी मिर्ज़ा और हिंदाल। However, when Humayun needed support to fight the Afghan nobles who had again risen against him, his brothers were not fully inclined to help. लेकिन जब हुमायूं को अपने भाइयों की मदद की ज़रूरत पड़ी, अफगान्स के अगेंस्ट तो उसके भाइयों ने उसकी मदद नहीं की। Instead, they even sided with some of the enemies, and Humayun's nature was forgiving when he should have punished them. हुमायूं की मदद करने के बजाय उसके भाइयों ने दुश्मनों का साथ दिया और हुमायूं की तबीयत माफ़ करने वाली थी, जबकि उसे उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी। Humayun's kind nature in dealing with his enemies, such as Bahadur Shah of Gujarat, and underestimating the clever and ambitious Afghan noble Shah Suri, lost his empire within 10 years of being crowned emperor. हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा माफ़ कर देने वाली थी और वो दुश्मनों के साथ रहमदिली से पेश आता था, जैसा कि बहादुर शाह ऑफ गुजरात और अफगान नोबल शेर शाह सूरी के साथ, जिसकी वजह से उसने 10 साल बाद अपना एम्पायर खो दिया। Sher Shah Suri had meanwhile taken control of Bihar, the richest province of Bengal. He now posed a challenge to Mughal power and had to be dealt with. The Battle of Kannauj in 1540 decided the fate of the Mughal emperor. Humayun was defeated and he fled to Persia, where he took refuge with Sher Shah Temaz. Sher Shah Suri declared himself emperor of Hindustan and successfully put down all opposition to his rule. शेर शाह सूरी ने बंगाल को कब्जे में किया, जो कि सबसे ज़्यादा रिच प्रोविंस था, सूबा था, और उसने मुग़ल्स को चैलेंज किया। बैटल में मुग़ल्स को हरा दिया। हुमायूं को हार हुई और वो ईरान की तरफ चला गया, जहां उसे ईरान के बादशाह शाह तैमूर ने अपने पास पनाह दी। इसी दौरान शेर शाह सूरी ने अपने आप को हिंदुस्तान का एम्परर, हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर कर दिया और अपने सामने आने वाली तमाम अपोजिशंस को सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया। Humayun in exile for the next 15 years. Humayun remained a fugitive, leaving Agra. He decided to go to Kashmir, but his brother Kamran blocked his way. अगले 15 साल तक हुमायूं खतरे से बचने के लिए इधर उधर छुपता रहा। उसने कश्मीर जाने का फैसला किया, लेकिन उसके भाई कामरान ने उसका रास्ता रोक दिया। Humayun then fled towards Sindh and took shelter with the Raja of Umarkot, and his son Akbar was born there. उसके बाद हुमायूं सिंध की तरफ चला गया, जहां उसे उमरकोट के राजा ने अपने पास पनाह दी और वहां उसका बेटा अकबर पैदा हुआ। In 1544, Humayun took refuge with Shah Temaz of Persia and spent 10 years there. उसके बाद हुमायूं शाह तैमूर ईरान के बादशाह के पास चला गया, जहां उसने 10 साल तक पनाह हासिल की।
To return Kandahar to the Persia and please the Shah, Humayun fought and defeated his brother Askari, and by 1550 he captured Kabul from his brother Kamran and set up a court there. Finally, with Shah Tehmas's help in 1555, Humayun recaptured Punjab, Delhi and Agra by defeating Sikandar Suri and ascending the throne of Hindustan after 15 years. शाह तहमस जो ईरान का बादशाह था उसने मदद की और हुमायूं ने अपने भाइयों अस्करी कामरान को हराने के बाद शेरशाह सूरी से मुकाबला किया और 15 साल के बाद हिंदुस्तान का तख्त वापस हासिल किया. Sadly, just 6 months later, Humayun had a fatal fall from the stairs of his private observatory. He was carrying books and he tripped as his feet were caught in his robe when he bent down on hearing the azan. अफसोस सिर्फ 6 माह बाद ही हुमायूं को एक बहुत गहरी चोट लगी जब वो सीढ़ियों से गिर गया. उसने हाथ में किताबें उठाई हुई थीं और उसके पैर उसके अपने ही कपड़ों में उलझ गए जब वो झुका अजान की आवाज़ सुन के और उस हादसे में हुमायूं की डेथ हो गई. हुमायूं एज अ रूलर. The long stay in Persia had greatly influenced Humayun, who adopted Persian culture. At Tabriz in Persia, he met the two artists, Mir Sayyid Ali and Khwaja Abdul Samad of the Safavid school of painting, and brought them to Agra. They were asked to illustrate the famous Persian classic, Dastani Amir Hamza. The Nastaliq script was also developed about this time, replacing the Naqsh script. Urdu and Persian are still written in Nastaliq script in subcontinent. हुमायूं जितने टाइम पर्शिया में रहा, ईरान में रहा, उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ हुमायूं पे और उसने पर्शियन कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद किया और सब कॉन्टिनेंट में लेकर आया. तब्रेज़ में उसकी मुलाकात 2 आर्टिस्ट से हुई, मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद से. वो उन्हें अपने साथ आगरा लेकर आ गया. उन्हें यहाँ लाकर फेमस पर्शियन क्लासिक दस्तान अमीर हमजा को इलिस्ट्रेट करने का कहा गया. नस्तलिक स्क्रिप्ट उस टाइम पर ही डेवलप हुआ. Humayun was not a military genius like his father, but was deeply interested in astronomy, astrology, painting and poetry. He was a kind and generous ruler whose kindness was exploited by his opponent. Despite that, Humayun proved to be an optimistic and persevering as he fought back to regain his empire. हुमायूं अपने बाप की तरह जंगजू नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा शौक़ रखता था डिफरेंट किस्म की मालूमात में, जैसे शायरी में, पेंटिंग में, एस्ट्रोलॉजी और सितारों के इल्म में. वो एक बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद रूलर था, जिसकी वजह से बहुत सारे उसके ख़िलाफ़ लोग जो थे, उसके दुश्मन जो थे, उसकी नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे. इसके बावजूद हुमायूं ने अपने आप को प्रूव किया और अपना एम्पायर वापस हासिल करने में कामयाब हो गया. शेर शाह सूरी 1540 to 45. An Afghan noble of outstanding capability, Sher Shah would have established as great a dynasty in Hindustan as that of the Mughals if he had not died so soon after becoming king. अफगान नोबल शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ वॉर करके हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाल लिया था और वो भी एक ग्रेट डायनेस्टी बना सकता था अगर उसकी डेथ ना होती इतनी जल्दी. Sher Shah's father had a mansab of 500 horses in Jaunpur, where Sher Shah learned administration in managing his father's state. Sher Shah first entered Babur's service in 1527 and then of another local chieftain. He went on to build up his own force and consolidated the position in Bengal, taking advantage of Humayun's weak position. Sher Shah took Delhi in 1540. So Sher Shah Suri, he learned from his father the administration and managing the affairs of the country. First he entered into Babur's service and then he joined other chieftains. Later, when he saw the position of Humayun, he decided to attack it. In a short reign of barely 5 years, he established a strong administration by dividing the empire into 47 units and further subdivision. शेरशाह सूरी ने 5 साल के अरसे में बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कायम की
इंडिया में। उसने एम्पायर को 47 यूनिट्स में डिवाइड किया और फिर उसकी सब डिविजन भी की, यानी छोटे छोटे हिस्सों में एम्पायर को डिवाइड करके उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। Land reforms proved beneficial to the running of the empire as land was served and then the share of the government was fixed at one third of the product, which could be paid in cash or kind. सो लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीनों के ऊपर भी डिफरेंट लॉज बनाए गए जिसकी वजह से एम्पायर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसमें गवर्नमेंट का फिक्स शेयर था जो कि प्रोड्यूस का जो भी प्रोडक्शन हो रही थी उसका 1/3 हिस्सा था, जो कैश में या उसी किस्म की किसी दूसरी अशिया में पे किया जाता था। At the village level, the panchayat system continued and the patwari and chowkidar were responsible for law and order. विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे पंचायत सिस्टम एक जुडिशरी का सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट केसेस के फैसले किए जाते हैं, वो कंटिन्यू हुआ। एंड पटवारी एंड चौकीदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। चौकीदार, गार्ड्स, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल किया गया। शेर शाह built the administration on the pattern of दिल्ली सल्तनत के तरीके से उसने एडमिनिस्ट्रेशन की। He reformed the currency and police and judicial and military department। कुछ चेंजेस लेकर आया करेंसी में, पुलिस, जुडिशरी और मिलिट्री डिपार्टमेंट में। Many of these reforms were later adopted by अकबर। ये बहुत सारी इसके जो लॉज थे, इसके जो रिफॉर्म्स थे, वो बाद में अकबर ने भी इस्तेमाल किए। The basis of Sher Shah's administrative reform was to look after the welfare of the people and to consolidate his Hindu subject by giving them justice and a fair land revenue settlement। जो बेस थी शेरशाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, उसका जो मेन बेस थी वो लोगों के वेलफेयर का काम करना था, लोगों के फलाह बहबूद का काम करना था, जिसमें उसने हिंदुओं को भी बहुत फेयर और जस्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट दी। हिंदुओं के साथ भी वो बहुत काइंडनेस से और फेयरली पेश आता था। ही वॉज फार साइटेड टू बिल्ड पब्लिक यूटिलिटीज सच एज कम्युनल किचन, अलार्म्स, हाउसेस, गार्डन्स, हॉस्पिटल्स एंड मकतब्स एंड मदरसास। और पब्लिक के लिए, लोगों के लिए बहुत सारे काम किए उनके वेलफेयर के लिए, जैसे लंगर खाने खोले, गार्डन्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज और मदरसे यानी स्कूल्स वगैरह बनाए गए। शेर शाह is acknowledged by most historians as a wise administrative and an able and kind ruler who tried to his best for the welfare of his people by giving them peace and justice। बहुत से हिस्टोरियन शेर शाह सूरी को एक अक्लमंद एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं जो कि एक बहुत काबिल और रहमदिल बादशाह था और अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता था, जिसकी वजह से उसके एम्पायर में जस्टिस और पीस थी, अमन और इंसाफ था। शेरशाह was killed when a cannon exploded too close to him while besieging the fortress of Kalinjar in 1545। शेरशाह सूरी की डेथ हुई जब उसके करीब एक तोप ने अटैक किया, एक तोप जो थी वो उसका धमाका हुआ जिसमें इसकी डेथ हो गई। He was the most talented Afghan Sultan and he might have established a dynasty of almost Mughal dimension had he not been killed in battle in May 1545। वो एक बहुत ही काबिल अफगान रूलर था और मुग़ल एम्पायर की तर्ज की एक डायनेस्टी बना सकता था अगर उसकी इस बैटल में डेथ ना होती। ग्रैंड ट्रंक रोड। Sher Shah's greatest feat was the building of a road from Sonargaon in Bengal to across River Indus in the Punjab. It was 1500 miles long and was called Sarke-Azim, Grand Road. Trees were planted on both sides of the road. Caravanserais were built all along the roads where horses could be exchanged or rested. Food and lodgings were provided for travelers and market towns developed near the sarais, improving trade. A quick postal system was put in place with news writers and new carries
Using these facilities, Sher Shah's foresight opened up the area for many generations to come. The Mughals extended the road further west, and at one time it crossed the Khyber Pass to Kabul in Afghanistan. शेर शाह सूरी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट ट्रंक रोड था, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं। पहला जीटी रोड इंडिया में शेर शाह सूरी ने बनाया, जो बंगाल से लेकर पंजाब तक आता था। इट वॉज ऑलमोस्ट 1500 माइल्स लॉन्ग, 1500 मीटर माइल्स लंबा था, और इसको सड़के अजीम यानी ग्रैंड रोड, अजीम रोड कहा जाता था। उसके साइड्स पे ट्रीज लगाए गए, सराय बनाए गए, जहाँ पर घोड़े बदले भी जाते थे और उनको रेस्ट का टाइम और जगह भी दी जाती थी। खाना पीना और आराम के लिए ट्रेवलर्स के जगहें बनाई गई। मार्केट टाउन उधर डेवलप हो गए, जिसकी वजह से ट्रेड भी इम्प्रूव हुआ। पोस्टल सिस्टम भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर शाह सूरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और तेज़ हो गया। मुगल्स ने इस सड़क को फर्दर लंबा किया और खैबर पास क्रॉस करके काबुल, अफगानिस्तान तक इसको लेकर गए। Later, the British built on these lines and laid other roads to connect the subcontinent. The same Grand Trunk Road still exists. In modern time, it has been metallized for use by car and trucks carrying agricultural produce and industrial output. In present-day Pakistan, the motorway has similar facilities. Today, the Grand Trunk Road covered a distance of over 25 kilometers from its origin at Sunargaon in central Bangladesh to Peshawar in पाकिस्तान। अंग्रेज़ों ने भी इसी तरह के रोड्स को आगे लेकर गए और इसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट एरियाज़ को कनेक्ट किया। आज भी ये रोड एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटर और मॉडर्न फॉर्म में। इनको मेटलाइज किया गया है ताकि गाड़ियों का और ट्रक्स का यूज़ हो सके। पाकिस्तान में इस वक्त मोटरवेज सिमिलर इसी तर्ज पे बनाए गए हैं। आज का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला तय करता है बांग्लादेश से पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। शेर शाह सूरी सक्सेसर 1545 to 1556. Sher Shah had left a strong empire to his son Ismail Shah, who ruled for 9 years. He was succeeded by his son Firoz Khan, who was murdered by his uncle Muhammad Adil Shah. The tussle for the throne among the Afghan nobles weakened the empire, as Sher Shah's later successors were weak and unfit to rule. The Afghan nobles became stronger, and peasants started to suffer under the oppressive rule. When an Afghan noble, Sikandar Shah, seized Agra and Delhi, the empire was divided. The rise of Humayun, a Hindu minister in general who was a tradesman by birth but tried to usurp power, caused jealousy among the nobles. In this state of disunity and chaos, Humayun was able to take back his lost empire. शेर शाह सूरी के जो सक्सेसर्स थे वो बहुत वीक थे और उनकी आपस में यूनिटी नहीं थी। शेर शाह सूरी के बेटे इस्माइल शाह ने 9 साल तक रूल किया और उसके बाद उसका बेटा फिरोज़ खान रूल पे आया। फिरोज़ खान का मर्डर किया उसके अपने ही अंकल मोहम्मद आदिल शाह ने। ये एक जंग थी जो तख्त के लिए जारी थी अफ़गान्स के बीच में, जिसकी वजह से शेर शाह सूरी के सक्सेसर्स, उसके बाद आने वाले रूलर्स कमज़ोर होते गए और रूल करने के काबिल नहीं रहे। अफ़गान नोबल्स ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होते गए। इस हालात में गरीबों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इसी बीच एक अफ़गान नोबल सिकंदर शाह ने आगरा और दिल्ली को सीज़ किया और एम्पायर को डिवाइड करने की कोशिश की। मीनवाइल एक हिंदू मिनिस्टर हिमू ने भी ग्रेजुअली राइज करना शुरू किया। आपस में जेलसी, आपस में वॉर्स और फाइट्स चल रही हैं। डिसयूनिटी और क्योस की सिचुएशन है, जिससे हुमायूं ने फ़ायदा उठाया और अपना खोया हुआ एम्पायर वापस लेने में कामयाब हुआ। Students, now let's move towards the questions. Question number 1. What led Babur to invade Hindustan in 1526? In 1524, Babur reached Lahore and captured it, left it to Alauddin Lodhi to rule as his governor. Daulat Khan Lodhi retook Lahore and sent Alauddin back to Kabul as a refugee. Now Babur decided to teach Daulat Khan a lesson and set out in 1526 to become the emperor of Hindustan. Number 2. What challenges did Babur face when he came down from Kabul to Hindustan? Babur faced many problems, many challenges when he came from Kabul to Hindustan. First of all, he had to face the large army of Ibrahim Lodhi at Panipat.
Then he faced the troops of Rana Sanga, later Muhammad Lodi, the brother of Ibrahim Lodi. Along with it, he had to face the heat of Hindustan. Number 3. Why is the first battle of Panipat considered important? The first battle of Panipat is considered important because it ended the rule of Lodhis in India and started the rule of Mughals in India. Babur, he won the first battle of Panipat and laid the foundation of Mughal rule in India. Was Rana Sanga of Mewar a worthy opponent of Babur? Yes, Rana Sanga of Mewar was a worthy opponent of Babur and gave him a very tough competition. Babur had to rise the spirit of his troops who lost heart. Number 5. The Tuske Babri is a good source for evaluating Babur's character. Do you agree? Yes. Tuske Babri is a delightful tribute to the refreshing honesty and honor of the founder of great Mughal dynasty. Despite being emperor of Hindustan, Babur pined for his Central Asian homeland and often spoke of the sweetness of its musk and melons. Question number 6. Explain why Humayun faced problem during his reign. Humayun did not have his father's energy and personality. He faced resistance from the Afghans and Rajputs. His brothers were not fully inclined to help him. Humayun's nature was forgiving, dealing with his enemies, such as Bahadur Shah of Gujarat, an ambitious Afghan, lost him his empire within 10 years of being crowned. Number 7. Do you think Sher Shah was a successful ruler? Give reason. Sher Shah built his administration on the patron of Delhi Sultanate. He reformed the currency, police, judicial, and military departments. Many of these reforms were later adopted by Akbar. The basis of Sher Shah's administrative reform to look after the welfare of the people and consolidate his Hindu subjects by giving them justice and land revenue settlement. Number 8. How was Humayun able to recover his kingdom in 1555? Sher Shah Suri died due to an accident in 1545. His successors were weak and incompetent. Taking advantage of this situation, Humayun captured Delhi and Agra and became the emperor of Hindustan. Question number 9. Why was the building of Sark-e-Azam useful for Sher Shah's government? Sher Shah's greatest contribution was the building of a road from Bengal to Punjab. It was 1500 miles long and was called Sark-e-Azam, the Grand Road. Trees were planted on both sides of the road. Caravanserais were built. Food and lodgings were provided. Market towns were developed near the serais in order to improve trade. A quick postal system was put in place. New writers and new carriers using these facilities. 10. Sher Shah laid the foundation for the administration of the Mughal Empire. Do you agree? Yes. In a short reign of barely 5 years, Sher Shah established a strong administration by dividing the empire into 47 units and further subdivision. Land reforms, panchayat and postal system was introduced by Sher Shah Suri in subcontinent. Sher Shah reformed the currency, police, judicial and military department. Okay students, we'll stop here. I hope आपको chapter समझ में आ गया होगा. कोई भी confusion है तो you can ask in the comments. We'll be doing the next chapter in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.